Good morning, everyone. Welcome to Dr. Rahul's Medicine YouTube channel. So, in this video, we'll talk about one of the most important topic of forensic medicine and toxicology, that is the poisoning. Okay. So, in the poisoning part, the first of all we'll discuss about the arsenic poisoning. Okay. Now, now first, there is a mnemonic by which we can remember the important parameters or the points related to the arsenic poisoning. Okay. Now, in the arsenic poisoning, there is a start with letter A. So, by letter A, what all things we can remember? Now, first, if a person is having an arsenic poisoning, then there can be a chance of abortion in a female. There can be a chance of abortion in a female. Okay. Now, again, with the letter A, we can remember that is a person with which is having an arsenic poisoning will have a Eldridge Mees line. Okay, that is the Eldridge Mees line. Mees line. Now, what is this Eldridge Mees line? Now, we'll look the image so that we can clearly understand the meaning of this Eldridge Mees line. Now, अभी देख सकते हैं जैसे पर्सन जिसको आर्सेनिक पॉइजनिंग हो रखी है उसके फिंगर के नेल पे देयर विल बी अ वाइट ट्रांसफर्स लाइन. दिस इज अ वाइट ट्रांसफर्स लाइन. Okay, this white transverse line which is present in the nail. Okay, this is called as Eldridge Mees line, which is a typical feature of the arsenic poisoning. Now, by the letter A, the third point that we can remember, that will be the aphrodisiac. Aphrodisiac. What is the meaning of the aphrodisiac? The meaning of aphrodisiac that the person who is having the arsenic poisoning, they will be increasing of the libido. There is increasing of the libido in a person having the arsenic poisoning. Okay. Now, this is all about the letter A related to the arsenic poison. Now we'll move forward to the next letter, that is the letter R. Okay. So by letter R, what all things that we can remember? The first point that we can remember, it will be the red velvety mucosa. तो रेड वेलवेटी म्यूकोसा ये आर्सेनिक पॉइजनिंग के साथ में एसोसिएट होता है. रेड वेलवेटी म्यूकोसा. This red velvety mucosa is also called as the strawberry mucosa. It is also called as the strawberry mucosa. ये एक टिपिकल फीचर होता है आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर, स्ट्रॉबेरी म्यूकोसा. तो लेटर आर से अपने को क्या मिला? रेड वेलवेटी म्यूकोसा. नाउ सेकेंड पॉइंट जो अपने को लेटर आर से मिल सकता है और जो मोस्ट टिपिकल फीचर है आर्सेनिक पॉइजनिंग का, दैट इज द रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन. दैट इज द रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन. रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन वर्ड सुनते ही पहले चीज दिमाग में जो आनी चाहिए, दैट विल बी द आर्सेनिक पॉइजनिंग. ओके. नाउ ये रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन कैसा दिखता है ये अपन देख लेते हैं. नाउ ये आप देख रहे हो, ये पर्सन को आर्सेनिक पॉइजनिंग हो रखी है, सो देयर विल बी अ रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन. लुक एट दिस डॉट्स. Okay, so this is a typical image of the raindrop pigmentation. Now let's move further. Now again with the letter R, the third thing that we can remember, there is one important test which is done for the arsenic poisoning. This test is called as the Renish test. Renish test. This test is done for the arsenic poisoning. और इस टेस्ट के साथ में हम एक टेस्ट और याद कर लेते हैं जो कि आर्सेनिक पॉइजनिंग में करा जाता है. दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज द मार्श टेस्ट. मार्श टेस्ट. ओके. तो ये लेटर ए और लेटर आर हो गया. नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू लेटर एस. ओके.
we move forward to the letter S. लेटर एस जो होता है आर्सेनिक के अंदर, उससे अपन क्या याद कर सकते हैं, दैट इज अ सब एंडोकार्डियल हेमोरेज. तो पर्सन हु आर हैविंग आर्सेनिक पॉइजनिंग विल हैव अ सब एंडोकार्डियल हेमोरेज. ठीक है, तो सब एंडोकार्डियल हेमोरेज का एक और नाम होता है सब एंडोकार्डियल हेमोरेज. It is also called as the Sheehan hemorrhage. The subendocardial hemorrhage is also called as the Sheehan hemorrhage. The Sheehan hemorrhage is associated with the arsenic poisoning. या तो Sheehan hemorrhage कह दो या फिर कह दो सब एंडोकार्डियल हेमोरेज. तो ये दोनों चीज के साथ एसोसिएट हो गई आर्सेनिक पॉइजनिंग के साथ में. ओके, नाउ द थर्ड लेटर, द नेक्स्ट लेटर for the arsenic poisoning which are associated with the arsenic poisoning is a letter E. Letter E. लेटर ई में क्या आ रहा है, लेटर ई में आ रहा है देयर विल बी द एक्सेसिव हाइपरपिगमेंटेशन. द पर्सन हु आर हैविंग द arsenic poisoning, for them there will be excessive pigmentation, excessive hyperpigmentation. एक्सेसिव हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो बॉडी पे नजर आएगी जिनको भी आर्सेनिक पॉइजनिंग हो रखी है. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग है द लेटर एन इन द आर्सेनिक पॉइजनिंग. लेटर एन में क्या आएगा, द पर्सन विल हैव एसोसिएटेड विद द न्यूरोपैथी. न्यूरोपैथी, तो आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर न्यूरोपैथी भी देखने को मिलेगी. एंड दिस न्यूरोपैथी इज अ टाइप ऑफ द सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी. ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाता है विच टाइप ऑफ न्यूरोपैथी एसोसिएटेड विद द आर्सेनिक पॉइजनिंग. सो इट इज अ सेंसरी मोटर. Sensory motor type of the neuropathy associated with the arsenic poisoning. Okay, it's clear. Now the next thing is I. Arsenic में next point जो आ रहा है that is I. Now the I stand for the one antidote of the arsenic. One antidote of the arsenic, and this I stand for the iron oxide. The I stand for the iron oxide. This iron oxide is an antidote for the arsenic poisoning. बट आयरन ऑक्साइड से बेटर एक एंटीडोट आप सबको पता है जो हम यूज़ करते हैं यूजुअली, एंड दिस एंटीडोट इज द बाल. ठीक है, इट इज द BAL. पहला एंटीडोट तो हो गया आयरन ऑक्साइड और सेकंड है बाल. द बेटर एंटीडोट, द बेटर एंटीडोट फॉर द आर्सेनिक पॉइजनिंग इट विल बी द बाल. इट इज एन बेटर एंटीडोट, better antidote as compared with the iron oxide. Okay, now last letter बचा है. The last letter is the letter C. The letter C. Now the C stand for the cholera. The C stand for the cholera. Cholera. Okay, the C stand for cholera. Means the person will have a symptoms like the cholera. Now अब यहाँ पे important चीज आ जाती है, what are the symptoms? What are the symptoms related with the arsenic poisoning? Okay, so we'll know the sequence of symptoms. The first symptom that will be associated in case of arsenic poisoning, it will be the throat pain. It will be the throat pain. गले में दर्द की शिकायत. ठीक है, ये होगा पहला symptom, first. Now the next symptom that can be seen after the throat pain, it can be the vomiting. It can be the vomiting in case of the arsenic poisoning. The third symptom that can be seen in case of arsenic poisoning, it will be a purging. It will be a purging. Now what is the meaning of purging? The meaning of purging is that the person will have acute severe diarrhea. The person will have the acute severe diarrhea. Okay, or we can say the rice watery diarrhea. Rice water diarrhea. That's why it is the symptoms are related with the cholera. Okay, now so these are the things, symptoms which are associated with the arsenic poisoning with the sequence. Now there is one of the most important questions that can be asked associated with the arsenic poisoning, that is which malignancy associated with the arsenic poisoning.
Okay, the malignancy associated with the arsenic poisoning is the skin malignancy. Skin malignancy. Okay, तो स्किन मेलिग्नेंसी एसोसिएटेड विद द आर्सेनिक पॉइजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपने को पता होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको यूजुअली वी शुड नो अबाउट दिस. ठीक है. नाउ स्किन मेलिग्नेंसी के अंदर भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि विच टाइप ऑफ द स्किन मेलिग्नेंसी एसोसिएट विद द आर्सेनिक पॉइजनिंग. तो द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. अगर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑप्शन नहीं दे रखा होता है, then we'll go for the basal cell carcinoma. Basal cell carcinoma. Okay. Now, the next thing that we should know is the one disease which is associated with the arsenic poisoning. There is one disease which is associated with the arsenic poisoning, which is called as the black foot disease. Black foot disease. Now, this black foot disease is associated with the arsenic. Okay. Now, there are some other important point that you should know about the arsenic poisoning, because every line in the arsenic poisoning is a question. Okay. Now, so there is one mnemonic by which you can remember, that are the 3 G's which are associated with the arsenic. The 3 G's. Okay, which are associated in case of arsenic poisoning. The first one will be, the person will have a garlicky smell. Okay, the person will have the garlicky smell. Second Z is associated with, the person will have a golden hair. The person will have the golden hair. अब आप बताइए, गोल्डन हेयर एक और टॉक्सिसिटी जो होती है उसके साथ एसोसिएट रहती है, दैट यू ऑल नो, दैट इज द कैडमियम टॉक्सिसिटी. इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कैडमियम. कैडमियम टॉक्सिसिटी के साथ भी गोल्डन हेयर अपने को दिख जाता है. ओके. द थर्ड जी which stand for, which is an investigation of choice actually for the arsenic poisoning, which is called as the Gurze's test. Okay. Gurze test. This test is actually an investigation of choice which is done for the arsenic compound. Okay. Now, अब अपन ने पढ़ लिया कि क्या क्या चीज़ एसोसिएट रहती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद दैट ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग. नाउ, अब whenever we are suppose we are doing a post-mortem. Okay, so what are the samples that we should take in case of arsenic poisoning if you are conducting PM post-mortem. Okay, so if there is an acute poisoning, so we'll take a sample of liver. Okay, in case of acute poisoning, liver is a site of sample. Second, if a person is having a chronic poisoning of arsenic, तो chronic poisoning के अंदर metals कहाँ deposit होते हैं? Metals will deposit in the bones. Okay, so in case of chronic poisoning, we'll take a sample from bones. Okay, these are the things that we should remember. Now, what are other site where the arsenic can deposit? जहाँ पे अपन samples ले सकते हैं arsenic का. ठीक है, other site for arsenic deposit. The other site for the arsenic deposit, it can be, तो पहला अपन ने पता कर लिया, that is the bone. Other side will be a skin, nail and hair. It is a skin, nail and hair. These are other sites where the arsenic can be deposited. Okay. Now, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको पता होनी चाहिए इसके अंदर, that will be these आर्सेनिक नाम में ही सारा आपको, अगर आप याद करने को बैठेंगे तो सारी चीज़ें आपको इस नाम के अंदर ही सारी चीज़ दिख जाएगी. दैट इज डेवॉशन, एल्ड्रिज, मीजलाइंस,
Okay, the increasing of libido, red velvety mucosa, strawberry mucosa, raindrop pigmentations, that is the Renish test, Mars test. Okay, so these are all the important points which are related with this. The malignancy associated with the arsenic poisoning will be a skin malignancy. Skin के अंदर भी कौन सी मिलेगी, squamous cell carcinoma. अगर वो option नहीं दे रखा है, will go for the basal cell carcinoma. Now the arsenic also associated with the black foot disease. Now the 3G which are associated with the arsenic is the garlicky smell, golden hair, and the gut disease test. And it is investigation of choice. Now, where the arsenic will be deposited in case of the acute poisoning, the arsenic will deposit in the liver. So we'll take a sample from liver. In case of chronic, we'll take a sample of the bone. Other site of deposition will be a skin, nail, and the hair. So these are the one of the most important topic in case of the toxicology, and we should all know about all these things. Hope you like this video. Do like, share, and subscribe this video. Okay, thank you so much.